हाय नेहा, सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू चेतना थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। मैं भगवान की दया से बहुत ठीक हूँ। हम्म। मतलब हर रोज डर लगता है कि पता नहीं लोग इतने सारे चीजें बताते हैं प्रेगनेंसी एंड देन ऑब्वियसली द एज इज नॉट बाय माय साइड कि एकदम मैं 20s में तो हूँ नहीं। तो डर तो लगता ही था, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। आई एम सुपर एक्टिव, आई एम मूविंग अराउंड एंड लाइफ इज गुड। हम्म। सो द फैंस ने ये जब न्यूज सुनी, जो हम मतलब आपने जो वीडियोस को पोस्ट किया, वी वर सो एक्साइटेड, वी वर हैप्पी फॉर यू कि चलो आपके घर गुड न्यूज आ रही है। सो आई मीन टेल मी द लाइक व्हाट वाज योर इमोशन दैट टाइम? वेल सी ऐसा नहीं था कि एकदम नॉन प्रिपेयर्ड वाला था दैट ओ माय गॉड इट्स अ सरप्राइज टाइप। ट्राई तो ऑब्वियसली आई वाज ट्राइंग टू बी अ मदर फॉर लॉन्ग, बट देन जब पता चला, सो आई थिंक पहले तो व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द वॉशरूम एंड चेकिंग ऑन द स्ट्रिप, सो गरम ऐसे धुआं निकलने लगता है और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि मतलब ऐसे शिवर करने लगते हुए इज एक्चुअली हैपेंड। मतलब जिस चीज जो मतलब दिस इज सो अमेजिंग दैट टू पिंक मैजिक लाइंस दैट यू वेटिंग टू सी एंड फाइनली you saw them and you don't know where to go and who to say and first how to react. So I think that is one very overwhelming moment. It's like one होता है ना, रिपोर्ट कार्ड आ जाता है जैसे रिजल्ट आ गया, तो वैसी वाली फीलिंग है और पास हो गए और वैसे भी ऐसे मतलब। सो आई वुड लाइक टू नो कि वो पहला पर्सन कौन था जिसको ये गुड न्यूज आपने बताई होगी? So it was not Ayush. No, so it was morning 5 o'clock. एंड आई मैंने पिछले रात ही सोच लिया था दैट आई वांट टू टेस्ट माय फर्स्ट यूरिन एंड आई वांट टू गेट माय टेस्ट डन। तो मॉर्निंग 5 o'clock I woke up because I put an alarm and I thought I should just go and test. और मैं थी उस वक्त कैलकाटा में मम्मी पापा के पास, my parents, I was at their house. So my first reaction and my first information was, surprisingly, I mean, I knocked my mother's room and 5 o'clock in the morning, I woke her up and I said, Mummy, I'm pregnant. So I woke her up and I told her that, I'm showing her the strip. और उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था that, I'm going to test or I'm looking forward for it. क्योंकि मैं इतना शेयर नहीं करती कि मतलब फिर उनके होप्स बढ़ जाते हैं that, they keep hoping that अच्छा ये भी कोशिश कर रहे हैं तो फिर मतलब और सारे सवाल शुरू हो जाते हैं. So I happened to show her and she's like, क्या है मैंने कहा दिख नहीं रहा है क्या है. And I said, मम्मी I'm pregnant है. तो मम्मी, and then as usual mothers, she hugged and she cried. मैंने कहा खुश हो के दुखी हो, करो कि नहीं करो. खुश हो के दुखी हो. So for mine, obviously I was so happy and I was so मुझे तो समझ नहीं आया. पापा भी पास में सोए थे, मैंने पापा को भी उठा के वो स्ट्रिप हाथ में दिखाया. मैंने कहा पापा आई एम प्रेग्नेंट. Oh God. So I think this was the first few 15-20 minutes, and then as time passed, by 7 o'clock I informed Ayush, and Ayush's reaction was absolutely not accepted again because he said ये सब strip से कुछ पता नहीं चलता है, तुमको क्या लगता है strip में तुमको पता चल गया कि pregnant हो? ऐसा कुछ नहीं है, अभी टेस्ट वेस्ट कराना. यू सी दैट उसको मतलब 3 महीने लग गए सिंक इन होने में दैट आई एम प्रेग्नेंट. एंड नाउ दैट आई हैव कम बैक फ्रॉम माय मॉम्स प्लेस एंड आई एम स्टेइंग विद हिम, नाउ he's getting the idea that yes, I am pregnant. Okay. Yeah. So now he'll be prepared. So how are you taking care of yourself? Like what is the routine, if we can talk? So routine is all I'm under nutrition, and of course a bigger nutrition, that's my mother. So I'm under her guidance, and all the to-do list that ये अच्छा है, ये खाना है या इतने मात्रा में खाना है, या protein intake, nutrition, all those extra vitamins and supplements, and so I am absolutely taking care that way. I'm not going haywire. मुझे ये भी खाना है, वो भी खाना है, and cravings also I don't have. Okay. Not at all. I mean, that's very surprising. I wanted कि मुझे कुछ cravings होने चाहिए, and that's pregnancy perks. That आधी रात को उठ के, oh my God, I need some ice cream. Oh my God, I want to have pastries. But ऐसा कुछ होता ही नहीं है और ऐसा कुछ मैं फील नहीं करती हूँ, तो मैं चुपचाप पूरी रात सोती रहती हूँ. And lucky Ayush, he doesn't have to go through all this trouble of mine. And so I have those to-do lists that these are the things that I have to eat.
in terms of taking care of the nutrition, and that's all that I'm following. I think the sleeping thing, जो आप सोती रहते हो ना, वो बेस्ट होता है. वो रिलैक्स सबसे ज्यादा चाहिए. बाकी आइसक्रीम वगैरह ना मिले चलेगा. करेक्ट. एंड इनफैक्ट ना ये आई शुड नॉट मेंशन बिकॉज टचवुड अगर फिर मुझे कल से नींद नहीं आए तो दिस हैज बीन लास्ट 5-7 days दैट आई एम स्लीपिंग वेल. मुझे रात को नींद नहीं आने की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, एंड आई वाज टॉसिंग बिटवीन द टाइम. दैट वन ट्रबल वाज दैट कि सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द मोर यू स्लीप द बेबी इज गोइंग टू ग्रो बेटर. इवन इट्स बीन एडवाइज्ड टू हैव अ नैप इन द आफ्टरनून, बट मुझे नींद हम डेली सोप कर करके ऐसे आदत हो गई ना डे नाइट शूटिंग करने की और ऐसे उल्लू की तरह जगने की कि अब रात को सोना इज सो डिफिकल्ट फॉर मी. But since 5-7 days, my life seems to be better in terms of sleeping. That's good. Yeah. It's very important. So tell me, like daily soap का आपने याद दिलाया मेरे को. तो something dramatic you think about, like where like जो daily soaps में होता है, वो she's pregnant, good news, और जो हम देखते हैं कि बहुत ड्रामा के साथ बताया जाता है, पूरी फैमिली होती है, वैसा कुछ थिंकिंग आता है कभी? बिल्कुल आता था जितना, बट सब डूब गया ना बिकॉज पहले मदर हैड द रिएक्शन, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या दिखा रही हूँ मैं. हस्बैंड का रिएक्शन, उसको विश्वास ही नहीं है, वो बोलता सब फालतू चीज है. ऐसे थोड़ी होता है कि 2 मिनट में कोई तुम्हें बता देगा कि तुम प्रेग्नेंट हो. You have to go and तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन का पोपट तो सबने कर दिया. So coming from a dramatic background of daily soap, I wanted everything was like oh my god, but it didn't happen like oh my god, it just happened very. असली में ये सब कुछ नहीं होता यार, मतलब और ऊपर से आइसक्रीम खाने की क्रेविंग भी नहीं होती है. ये क्रेविंग भी नहीं होती, मतलब सब झूठ बोलते हैं यार. 11:12 दोनों घर से चले, कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है, आराम से सो रहे हैं. So nothing as such happen. I'm sure होता होगा, पूरी तो ख्याली पुलाव नहीं होती है, but every pregnancy is different. So yeah. Okay. And I can see you are wearing jacket and all. So how are you managing इतनी ठंडी में? ठंड पहले कुछ साल तो शादी की नई आदत थी, वो टिपिकल हीटर लगा के. एंड फिर दूसरे तीसरे साल से मैं आना ही बंद कर दी थी क्योंकि मैं बॉम्बे में ही रहती थी, क्योंकि ठंड बहुत लगती थी और इतनी आदत नहीं है. तो हम कैलकाटा बॉर्न, बट कैलकाटा में भी इतनी ठंड नहीं होती थी. सो अब वही कहते हैं ना कि रहते रहते इंसान को आदत हो जाती है. अब मुझे ये ठंड भी अच्छी लगने लगी है. एंड आई एंजॉय विंटर्स नाउ, आई एंजॉय गोइंग आउट. और अब मैं इतना, पहले जो एकदम मतलब सुपर लोडेड रहती थी जैकेट्स एंड स्वेटर से, अभी तो मैं ज्यादा इसलिए लग रही हूँ बिकॉज आई पुट ऑन ऑल्सो लॉट ऑफ वेट. बट अब winters are very nice for me. I enjoy the winters here in Patna because it's beautiful, the मौसम is nice, the food is good, and चिपचिपी गर्मी नहीं है. You can have your rooftop parties and you can have those afternoon lunches sitting outside. So I enjoy this. फूड की बात करें, क्या सबसे मजेदार है इस वक्त आपको खाने के लिए? मजेदार क्या है? The freedom, I'm enjoying the time, but the freedom that I don't have to think. पहले हर perspective में ये सोचना पड़ता था कि internally also you have to be stronger, as well as externally you should not pump मतलब plumpy, because obviously you can't be you can't really put on weight. And I never used to like, I'm not saying that नहीं put on करके actor नहीं बन सकते, लेकिन I always liked myself as skinny only. So but उस वक्त restrictions थे ना मेरे लिए कि ये खा नहीं सकते, या ये पसंद है तो भी नहीं खा सकते. लेकिन अभी तो you have no restrictions, you have no restrictions जिसको रखना है, because मेरी to do list बहुत ज्यादा है. And I still believe that pregnancy में thyroid and sugar सब आ सकता है. These are the problems. So I avoid sweets and all that. But then there's not like no. If I really want to have one rasgulla, I can have rasgulla. So that freedom, और वो केसर वाले गुलाब जामुन, so and ठंड में गाजर का हलवा, so once in a while हफ्ते में 1-2 बार तो खा ही सकते हैं. So ये जो freedom अभी मिल रही है ना कि
जो मन में आ सकता है, आ रहा है, वो आप खा सकते हो। और इस नाम पे कि मुझे कोई क्रेविंग नहीं हो रही है, ये बेबी को चाहिए इसीलिए ये क्रेविंग हो रही है। So justification भी क्लियर है, बिकॉज कई लोगों ने मुझे बताया है कि मैंने यू आर हैविंग अ क्रेविंग, अगर कुछ भी खाने का मन करे during pregnancy, it's because the baby wants to eat. So I think I have all the reason to get excused by myself now that ये कोई रोक रहा है, लेकिन खुद को बहुत गिल्ट होता था, लेकिन अभी कोई गिल्ट नहीं है, and I'm happily eating all. ओके, सो जैसा कि आपने मेंशन किया कि स्किनी रहना आपको पसंद है, तो बहुत सारे लेडीज होते हैं या फिर इंडस्ट्री में भी लोग प्रेग्नेंट होना अवॉइड करते हैं कि वेट गेन हो जाएगा, बॉडी शेप चेंज हो जाएगी, इट्स बहुत पहले से ये सारी चीजें सुनने में आती थी। पहले तो लोग शादी भी बहुत जल्द नहीं करते थे कि रोल्स मिलने कम हो जाएंगे। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? टाइम इज चेंजिंग चेतना, आई डोंट थिंक पहले होता होगा। पहले लोग प्रेगनेंसी को इतना अनाउंस भी नहीं करते थे। एक्टर्स 3-4 साल गायब हो जाते थे, and then they used to come back normal. But I think the time has changed and people have accepted everything with time. Be it you get married, it doesn't changes your fan following. Be it your mother, it doesn't change your fan following. So people have grown in their way of looking towards an actor. So I think that has given us a liberty to have a normal life and गायब नहीं होना, क्योंकि अगर ये इनसिक्योरिटी रहती तो मैं भी नहीं दिखती, क्योंकि करना तो मुझे जिंदगी भर एक्टिंग ही है, इसके अलावा ना कुछ आता है और ना कुछ करने की चाहत है। तो भैया यही अगर रुक जाएगा तो कैसे चलेगा? तो अगर ऐसा होता कि अगर आप माँ बन जाते हो तो आपको काम नहीं मिलेगा, तब भी मैं ऐसे प्राउडली चौड़े में बोल के नहीं घूमती कि आई एम बिकमिंग अ मदर, और आई वुड हैव बीन इनसिक्योर ऑफ बीइंग अ मदर. But there is no as such, no, it's just a phase of your life, 2-3 years of your life that you thoda sa fluctuating with time, or maybe not even 2 years, depends on how your baby is going to react and how much the baby needs an attention. So kar lo, uske baad maze se wapas aa jao, and you have your family to support and you have your things to support that the baby can grow at the right. You have to balance things. So mujhe aisi na insecurity thi kabhi, and the industry has grown with time. More than the industry, the fans have, the viewers have grown with time. They don't subject you with being married or being a divorcee or being having a mother. They don't judge you over that. They judge you over your performance and how you look. That's all what it says. So Devina has started working like just after 28 days. So it's like, yeah, she's performing also in New Year apna evening ko 31st ko. Wow. So, that's pretty fast. Okay. Yeah. So they did a press conference and she's performing. वो गुरमीत और वो दोनों perform कर रहे हैं. So ये बताइए आपका इंस्पिरेशन कौन है? I mean, अगर मेरे को याद आता है कि जब करीना कपूर ने अपने फर्स्ट चाइल्ड के साथ जब रैंप वॉक किया था, so that was like huge thing and लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था, और फिर वो एक ट्रेंड भी चेंज हो गया था. So no hiding, feeling proud, getting job, everything. So who is your inspiration from the industry? See, I think these are all the women who have been an inspiration of, and these are the women who have actually made a benchmark to our parents also. क्योंकि अभी मैं कई बार एग्जांपल देती हूँ ना कि मम्मी अगर कहती है मत करो या फिर मत जाओ या मत, मतलब अगर मैं एक दिन बाद शूट कर रही हूँ and I'm doing something for my social media or I'm doing some brand shoot, तो पहले मम्मी को थोड़ा ग्लिच होता है कि बैठो ना, थोड़ा रिलैक्स करो, वॉक कर लो, बट ये सब करने की अभी क्या जरूरत है? And I have people who have done it, such inspirational ones like Kareena Kapoor. Even Alia Bhatt did such a great Alia Bhatt, correct. All through her journey. I mean, the way she has been active, looks like it's like a normal life for her, except her belly, nothing has changed. And so you have these people, these young people, and obviously Kareena Kapoor, and they all have shown their pregnancy so flawlessly and been working and been so proud of it. So I think they have set an example for us, and now if I am doing, I might be an example for somebody else. So I think this is how this world is moving and we get inspired by each other. So that has been helping all of us.
सोशल मीडिया से मुझे एक बात याद आई नेहा, रिसेंटली आपने कोई एक वीडियो पोस्ट किया था, उस पे बहुत ज्यादा रिएक्शंस हुए थे, ट्रोलिंग, लोग थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे. सो डिड यू सी ऑल दोस कमेंट्स एंड क्या कहेंगे आप उस बारे में? I obviously comments इतने तो नहीं, सारे तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन I have seen those news that that there are women who are addicted also, but that's a national platform, that's a universal platform. Everybody has the right to say a yes or no, and I have always said the content that I make is not a general content for everybody to follow. It's an experience that I am sharing, what I am going through and what I am applying in my life. मैं ये नहीं कह रही कि मैं जो कर रही हूँ ये पत्थर की लकीर है, आपको भी वही करना है. मैं ये कहती हूँ कि ये मेरे myth थे. I had always a myth that you cannot have coffee because I'm a coffee lover and I'm a black coffee diehard. I can't do without black coffee. So I had insecurities about it, but I am having 2 coffees a day. सुबह, दोपहर और शाम के 4 बजे के बाद मैं बंद कर देती हूँ. So these are the myths that I wanted to share that I am following and it's going absolutely fine. If that can help somebody, अगर कोई मेरी तरह पागल है कॉफी को लेके, will actually help somebody. 2 कप की जगह 1 कप पी लो. एटलीस्ट जिंदगी को ऐसा मत समझो कि प्रेगनेंसी हो गई मतलब दुखी हो गए. Then people say that you can't have sex when you are pregnant. I think it's a very diversified way of putting it. 3 months you should be cautious about it because the placement of the baby is the maximum on the 3rd month. All the organs are made. That's the most crucial 3 months. So वो 3 महीने you should not. But उसके बाद, but do you have to take a doctor's advice? You can't be listening to me and doing things, right? So these are the myths that I was breaking, and I thought it's going all smooth. And that's why I had shared things. But ट्रोल की बात नहीं है, वो ट्रोल नहीं लेती मैं ऐसे. डिस्कशन है, पॉइंट ऑफ व्यूज है, लोग रख सकते हैं. आई एग्री टू यू, आई डोंट एग्री टू यू, एंड दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. आई एम ग्लैड इवन व्हेन यू आर डिसएग्रीइंग, यू आर एटलीस्ट डिसएग्रीइंग एंड यू आर रीडिंग इट एंड यू आर डिसएग्रीइंग. मेरे लिए ये भी बहुत है. अगर मेरी कोई गलती होगी तो आई विल रेक्टिफाई दैट आल्सो. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. दैट्स ग्रेट. और क्या चल रहा है लाइफ में ये बताइए, करियर वाइज, ये सोशल मीडिया के अलावा व्हाट्स एल्स हैपनिंग? What else हो सकता है, अभी एक बात बताओ. nothing can cook solid right now because I'm just doing a lot of brand shoot which is connected to pregnancy, which is connected to motherhood and baby products and all that, because right now my journey as such, I'm looking like that, so of course I am going through all that. And in terms of commitment of work, I don't have any because I have to complete this project of my journey and then I can pick up anything else or anybody else will pick up. अभी तो मुझे कोई किसी काम के लिए क्या ही लेगा. नहीं, obviously that's the truth and that's pretty much acceptable कि अभी मुझे ही नहीं पता है कि मैं 1 साल नहीं कर पाऊंगी या 1.5 साल नहीं कर पाऊंगी, so किसी को कैसे commit कर सकते हैं. But these small things which is keeping me busy every alternate day, and I'm pretty happy with this right now. And I think it's the most important thing, most important job, work, whatever you can call, जो भी रहे, लाइफ का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है, और इसको कैरी करना, इसको सेफ रखना, सिक्योर रखना is a big responsibility. So yes. So मुंबई आने के कब प्लान्स हैं? बस डिलीवरी के बाद I think again 6 months, and then I'll go and celebrate with all of you once there in Bombay. So you'll be there, but for delivery also? No, for delivery I'll be going to Calcutta. Okay. Nice. मम्मी के पास? हाँ, मतलब all my doctors are there, and not that I don't trust on the doctors in Patna, but I think I believe I have been born and brought up in Calcutta. I have infrastructure wise, I think it's better to be in Calcutta and I'll feel more safe. Well, that's all. Thank you so much, Neha, and all the very best. Thank you so much. Thank you, Chetna. It was always lovely talking to you.